Hey guys, am I audible to you all? Can you all hear me? Am I audible, guys? Good evening. A very good evening to all of you. Good evening, guys. I hope I'm audible to all of you. Just drop a yes in the chat box if you guys can hear me clearly. Just drop a yes. Okay, fine. So it's going to be a very, very interesting session today, wherein we'll be having a look at what parajumbles are, the importance of parajumbles, and more importantly, the approach that you guys need in order to solve these parajumble questions. Right? Approach समझने के बाद, we are also going to spend some of the minutes to solve some of the important questions on parajumbles, right? So stay stuck till the end and let's quickly start. Now, first of all, before we even start with the session, I want to understand what you guys know about parajumbles, right? Because it's very important for us to understand the definition or the concept itself before we move forward to understand the approach. राइट किसी भी चीज़ की अप्रोच समझने से पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका मतलब क्या होता है सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पैराजम्बल्स what according to you guys are parajumbles? See, the name itself suggests something, right? Parajumbles यानी क्या होता है एक पैराग्राफ दिया होता है in the form of a few options and those options are in the jumbled form, right? Jumbled यानी उल्टा पुल्टा करके options हमारे सामने रख दिए जाते हैं, right? हमें क्या करना होता है, हमें उन्हीं options को arrange करना होता है. We have to arrange those options in such a way that it makes a coherent or a logical paragraph. That's what a parajumble is. Parajumbles में again I'll repeat क्या होता है, कुछ options आपके सामने रख दिए जाते हैं in a jumbled form and you have to arrange those options. It just acts like a puzzle, right? जैसे puzzle में आप चीज़ों को arrange करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है. You have to arrange those options in such a way that it looks like a logical paragraph, right? Okay, now what we are going to do is we are going to understand a proper approach or a strategy that you guys need in order to solve these kind of questions. Okay, so let's move forward. I hope you guys can see the approach on the screen clearly. You guys can, right? Okay, let's start. Now, the very first thing that you're going to do is extremely important. इसके बिना parajumbles incomplete है. ठीक है? So the very first thing that you guys are going to do is that you guys are going to find the purpose of the paragraph. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना. उनको कोई मतलब ही नहीं है कि पैराजम्बल में क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या आइडिया है, क्या पर्पस है, क्या मैसेज डिलीवर किया गया है. नथिंग, सिर्फ भागो क्वेश्चन पे ओपनिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करने लग जाओ. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, right? So most of the students do this mistake of not finding the purpose of the paragraph and directly jumping to finding out the opening statement. ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है? You guys are going to find out the purpose of the paragraph first and then you guys are going to start the approach. Okay, in fact this is a part of the whole approach, right? Now you guys might feel कि इसकी क्या जरूरत है? Why do we need to find out the purpose of the paragraph before moving forward? राइट हम सीधा अप्रोच से ही स्टार्ट कर लेते हैं, हम सीधा ओपनिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर लेंगे, धीरे धीरे पूरी पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे एंड विल फिगर आउट द सीक्वेंस. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? So finding the purpose of the paragraph is extremely important because जैसे आप puzzle solve करते वक्त ये पता लगाते हो कि हमें puzzle में create क्या करना है, उसके बिना puzzle incomplete है. राइट अगर आपको बोल दूं, मैं आपको कुछ पार्ट्स दे दूं पजल के, ठीक है, एंड आई जस्ट आस्क यू टू अरेंज देम, आप सबसे पहले क्या पूछोगे मुझे? मैम बनाना क्या है? डू आई नीड टू मेक अ कैट, डू आई नीड टू मेक अ डॉग, डू आई नीड टू मेक अ हाउस? क्या बनाना है मुझे? तो जब पता ही नहीं होगा कि बनाना क्या है तो आप उन पार्ट्स के साथ करोगे क्या? हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज देम? वुडंट मेक एनी सेंस, राइट? सिमिलरली अगर आपको कोई पैराजम्बल सॉल्व करना है,
अगर आपको कोई पजल सॉल्व करना है तो आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि वो पैराजम्बल में जो पैराग्राफ दिया है, जो ऑप्शंस दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, उसका पर्पस क्या है, वो मीन क्या करता है, व्हाट इज द मैसेज that is being delivered to you guys in those particular options kept in front of you, right? So सबसे पहले take a quick glance. It's not going to take more than 6-7 seconds. ठीक है, इतना भी नहीं लगेगा, एक क्विक ग्लांस ले लो एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि वो पैराग्राफ किस बारे में है. ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सो डोंट वरी. ठीक है, so सबसे पहले क्या करना है, टेक 7-8 seconds, मैक्सिमम 10 seconds. 10 seconds में आपको ये पता लग जाएगा कि वो पूरे पैराग्राफ में मैसेज क्या है. You just need to get an overall idea or the main message of the paragraph. That's it. इसके बाद आप स्टार्ट करोगे पैराग्राफ को सॉल्व करना. ठीक है, the very first thing that you're going to do is that you're going to find out the opening statement. सबसे पहले क्या करोगे, ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे फाइंड आउट करना. अब ये ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पैराग्राफ को स्टार्ट करता है. Right now, how are you guys going to find out the opening statement? There are a lot of things that you need to consider while finding out the opening statement. सबसे पहला most important factor ये है that you need to focus on that particular option जो आपको लगता है कि किसी person को किसी message किसी object को या किसी message को introduce कर रहा है. किसी भी चीज़ का अगर आपको इंट्रोडक्शन दिखता है कोई भी ऑप्शन में, तो समझ लो वो आपका इंट्रो स्टेटमेंट होने वाला है, वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होने वाला है. ठीक है, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू स्टार्ट फाइंडिंग द ओपनिंग स्टेटमेंट, बिकॉज इफ यू डोंट फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट तो आपको आगे जाके इश्यूज होंगे, आपको आगे जाके सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. सो इफ यू आर एबल टू लुक फॉर एन ओपनिंग स्टेटमेंट, देन इट्स रियली वेरी वेरी गुड, इट्स गोइंग टू सॉल्व हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स. राइट, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, अगर मिलता है दिख रहा है सामने तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट स्किप इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट तुरंत दिख जाना चाहिए, उसमें उसको ढूंढने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है. राइट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया और अगर आपको एक दो ऑप्शंस की भी पेयर दिख गई ना, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट अपने आप मिल जाएगा. ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट धीरे धीरे मिलता है, तुरंत नहीं मिल जाता है सबसे पहले ग्लांस पे, बिकॉज जैसे जैसे आप पैराग्राफ को पढ़ते हो वैसे वैसे आपको पता लगने लगता है कि अच्छा व्हाट कैन बी द कंक्लूजन और व्हाट कैन बी द एंडिंग पार्ट. जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हो तुरंत तो आपको पता नहीं होता ना कि ऐसे का कंक्लूजन मैं क्या देने वाला हूँ, वो तो फ्लो में हो जाता है. पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, फिर बॉडी लिखते हो एंड देन यू रियलाइज अच्छा मैं ऐसा कंक्लूजन क्रिएट कर सकता हूँ. सो क्लोजिंग स्टेटमेंट या कंक्लूजन ढूंढने की इतनी जल्दी नहीं है, अगर मिल रहा है आपकी आंखों के सामने है, इफ यू गाइस कैन फाइंड आउट द कंक्लूजन, इफ यू कैन find out the statement starting with therefore or hence, then you can keep it aside, you can think of it as your closing statement, but as of now opening statement is extremely important. वो पहले ढूंढ लो, उसके बाद बाकी सारी चीजें फिगर आउट हो जाएगी धीरे धीरे. राइट, नाउ आफ्टर फाइंडिंग आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट, अच्छा एक और चीज है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है. ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इफ अ स्टेटमेंट has any idea or any person being introduced, then it's going to be your opening statement. ओपनिंग स्टेटमेंट क्या नहीं हो सकता, if your option, let's say, is starting with a pronoun, right? If your option is starting with a pronoun, then it has less chances of being your opening statement. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा ही नहीं, मैं बोल रही हूँ कि चांसेस कम है कि वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हो. अब क्यों चांसेस कम है, क्यों वो ओपनिंग स्टेटमेंट हो भी सकता है, क्योंकि बहुत बार आपको जो पैराजम्बल है वो कहीं बीच में से उठा के दे देते हैं. ठीक है, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो आप, बीच में से वो आर्टिकल के कहीं बीच में से आपको पैराजम्बल उठा के दे दिया. अब उस आर्टिकल में पहले पैराग्राफ में किसी को इंट्रोड्यूस किया था लेकिन बीच पैराग्राफ में तो इंट्रोड्यूस नहीं किया है. राइट, सो पहले आप इंट्रोड्यूस करते हो किसी पर्सन को, फिर धीरे धीरे यू स्टार्ट यूजिंग अ प्रोनाउन. राइट, तो अगर बीच में से कहीं से उठा के दिया है आपको पैराग्राफ, then that paragraph might have pronouns, right? It might have a lot of pronouns. So it's very important that you realize कि जब भी कोई statement pronoun से start होता है, it's not necessary that it's not going to be your opening statement. It might be your opening statement, but what I'm saying is the chances are less. So you need to keep it aside for that particular moment, and you need to look at the rest of the options and check if you can get a perfect option
that is pretty much suitable or pretty much makes sense as an opening statement. So आपकी first priority क्या होगी? Your first priority to have a statement that possibly doesn't start with a pronoun or that has an introduction of a person or an idea or an object. ठीक है? Once you find out the opening statement, what are you going to do next? The next step will be to find an option that gets connected with the opening statement. राइट आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इंट्रो स्टेटमेंट या ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करे. ठीक है. नाउ इफ यू फील लेट्स से देयर आर फोर ऑप्शंस राइट ए बी सी डी. नाउ इफ यू नो दैट योर ओपनिंग स्टेटमेंट इज लेट्स से गोइंग टू बी बी. ठीक है. Vamsi, I'm just using a combination of both, so don't worry, okay? So let's say, for example, if I say that there is a parajumble and there are four options A, B, C, D kept in front of you, and you know that B option is going to be your opening statement. ठीक है. अगर आपको लगता है कि B option आपका opening statement होने वाला है, then what are you going to do next? What is the next step? The next step is to find out an option that actually gets connected with the opening statement. So if you feel that C option is making much sense when it is with B, then you guys are going to fix both of them together. Okay, so this is going to be the next step, and then you're going to repeat the same with the rest of the options. A से B को join, I mean B option अगर opening statement है तो B को C से join कर लिया, फिर देखो कि C से क्या join हो रहा है. So you're going to repeat the process, and then that's how you're going to solve the whole parajumble. But now the twist comes. If you feel that you've been able to find out the opening statement, but for some reason you're just not able to find out an option that gets connected to the opening statement, तब क्या करोगे? ओपनिंग स्टेटमेंट तो मिल गया, अब कुछ नहीं हो पा रहा है. You're not able to find out an option that's getting connected with the opening statement. Then what are you going to do? You're going to go ahead and try to find out the mandatory pairs. Finding out mandatory pairs is extremely important. Right now, what are these mandatory pairs? Mandatory pairs are actually those two options that you just cannot separate from each other. You have to keep them together. राइट. ऐसे दो ऑप्शंस उन दोनों को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते हो. ठीक है. दे हैव टू बी विथ ईच अदर एंड यू जस्ट कैन नॉट सेपरेट देम. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट द मैंडेटरी पेयर्स? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, if your introductory statement, if your opening statement has an introduction for a person, okay, for person A, okay, now you have introduced that person A in your opening statement. Now you're going to look for an option that actually gives a pronoun to that person A. तो अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है, if you find an option that has a pronoun he, assuming that he's coming from a masculine gender, अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखता है that has the pronoun he, then you obviously know that this particular option has some connection with the introductory statement. How? Because introductory statement में उसी person को introduce किया है, and उसके just बाद कौन सा ऑप्शन आप रखोगे? The one that has a pronoun for that introductory person. I hope this makes sense. So you basically, what you're going to do is you're going to find out an opening statement, and then you're going to look for a particular option which makes sense if you put that statement together with the introductory statement. इसी तरह आप mandatory pairs बनाओगे. आपको कोई दो ऐसे options ढूंढने हैं. You have to look for those two options जो आप separate नहीं कर सकते हो. राइट. आपको पता है दैट वो दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं. दोज टू ऑप्शंस आर गोइंग टू गेट स्टक विद ईच अदर. राइट. सो इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट इवन वन मैंडेटरी पेयर, okay, even if you are able to find out just one mandatory pair, things are going to become hell easy for you. Right? Why? Because see, you have the opening statement. Let's say the opening statement is A. Now you have one mandatory pair. Let's say you realize that okay, B and C, both of them make one mandatory pair and we cannot separate them. So अब आपको क्या करना है? You know that A is your opening statement. You know that B and C are going to be together. Now you just have to figure out where you're going to keep D. Okay, either the sequence can be A, D, B, C, or the sequence can be A, B, C, D, right? These are the only two options that are possible. If you know that A is your opening statement, and if you also know that B and C are making a pair, then now you're just left with two possible sequences. Right? A, D, B, C और A, B, C, D. That's it. Because A की पोजीशन तो स्टक हो गई, वो तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है. सो उसको आप पहले ही रखने वाले हो.
बी और सी आपको पता है एक साथ आने वाले हैं, यू कैन नॉट सेपरेट देम. सो बचा क्या, डी. नाउ द पॉसिबल सीक्वेंसेस कैन बी, या तो डी ए के तुरंत बाद आ सकता है या डी लास्ट में आ सकता है. सो ईदर इट कैन बी ए बी सी डी और इट कैन बी ए डी बी सी. सो इवन इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट टू थिंग्स, opening statement and just one mandatory pair, then trust me, you're definitely going to get your correct sequence. ठीक है. सो फाइंडिंग आउट मैंडेटरी पेयर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जस्ट फोकस करो कि कौन से दो ऑप्शन एक दूसरे को कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. एंड फोकस अ लॉट ऑन प्रोनाउंस. योर प्रोनाउंस चैप्टर, प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. he, she, it, they, if you look at all these words in the options, then you have to know कि जो particular pronoun है वो कौन से noun के लिए use हुआ है. Let's say if in any particular option you see the word these, or you see the word they, you see the word this, तो आपको make sure करना है कि वो जो pronouns use हो रहे हैं वो कौन से noun के लिए हो रहे हैं. एंड इफ यू रियलाइज कि अच्छा दीज का जो प्रोनाउन है वो एक पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज हुआ है इन एनी पर्टिकुलर ऑप्शन, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू कीप दोज टू ऑप्शंस टुगेदर. Right, makes sense. So pronouns are definitely going to play an extremely important role in this parajumbles ka concept. So make sure that if you don't understand pronouns, you go back to the class, you go back to the school, and understand the concept of pronouns, and then come back to solve these parajumbles. Okay. Okay, any questions, any doubts till now? Can I just have a yes, yes, yes in the chat box if things are understandable? Do you guys understand the process, or do you guys understand the approach that you're going to use in order to solve these questions? Yes? A yes from all of you, please. So I'm just going to repeat the process. See, पहली चीज क्या है? पहले सबसे पहले पर्पस ढूंढो कि पर्पस क्या है पैराग्राफ का. व्हाट इज द पैराग्राफ ऑल अबाउट. उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढो. ठीक है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट. उसके बाद इफ यू आर नॉट एबल टू, उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द लिंकिंग स्टेटमेंट. इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द लिंकिंग स्टेटमेंट, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग मैंडेटरी पेयर्स. Once you even find out one mandatory pair, your work almost becomes very very easy, right? And then you can just make the whole sequence by trying out multiple sequences, right? It's just how you work ways with trial and error methods, right? Trial and error method is going to work like crazy for you guys for this particular concept. Okay. Now what we're going to do is we're going to have a look at one question, and बहुत easy question मैं आपके सामने रखने वाली हूँ. I'm not going to bombard you with difficult questions in today's session because I understand this is just we have just understood the concept. And ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग कि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझ लो ना, उसके तुरंत बाद कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे मत जाया करो, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. ठीक है. स्टार्ट विद द इजियर क्वेश्चंस एंड देन धीरे 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 गो टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है. Okay, so the very first question that I'm going to keep in front of you guys is right here. Come on, start. I hope you guys can see the question. The question that starts with, while you might think that you see or are aware. आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है मैंने. थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक आप तक क्वेश्चन पहुंचने में. Just give it a few moments. And the question that starts with, while you might think, okay, I think you can already see the question. So start solving this, follow the same approach that we just discussed, and give your answers in the chat box. Come on, I'm waiting for all your answers. Okay, Raghav.
Okay, Shashank, I've started getting answers from all of you. सबके आंसर्स चाहिए मुझे चैट बॉक्स में. कम ऑन गाइस, स्टार्ट. ओके खुशबू. ओके अंशुल. ओके धिमाई. गुड गुड, आई एम गेटिंग सो मेनी आंसर्स, आई एम वेरी हैप्पी. ओके खुशाग्र. ठीक है, फाइन. Let's try understanding this, how it's going to work. Now first option क्या बोल रहा है? While you might think that you see or are aware of all the changes that happen in your immediate environment, there is simply too much information for your brain to fully process everything. ठीक है. Now if you kind of notice, if kind of focus on this question, you can clearly see that there are two pairs. In fact, even before finding out the opening statement, we can clearly see कि जो चार ऑप्शंस है उनमें से दो ऑप्शंस एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं और बाकी के दो ऑप्शंस एक दूसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं. Right? So the whole paragraph is kind of divided into two things. Right? One is brain and the other is eyes. Right? So if you look at the first option, it says, while you might think that you see or are aware of all the changes that happen in your immediate environment, there is simply too much information for your brain to fully process everything. Second option says, psychologists use the term change blindness to describe this tendency of people to be blind to changes, though they are in the immediate environment. आप अगर देखते हो ना, सो इवेंचुअली आप you'll end up making two mandatory pairs. और वो pairs कौन सी है? सी अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखते हो, sometimes big shifts happen in front of your eyes. eyes किससे relate कर रहा है? blindness से. right? So you know that 2 and 4, both of them are making a strict pair with each other. इन दोनों को तो आप अलग कर ही नहीं सकते हो. राइट. सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग. लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर पैराजम्बल फ्रॉम द फोर्थ ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता बिकॉज इट्स स्टार्टिंग विद अ प्रोनाउन. इट कैन नॉट बी अवेयर. व्हाट कैन नॉट बी अवेयर? वी डोंट नो. सो लेट्स जस्ट कीप इट असाइड. वी कैन नॉट स्टार्ट our parajumble with the third option. Second option से भी start नहीं कर सकते. क्यों? Because it has the pronoun this. Psychologists use the term change blindness to describe this tendency. Which tendency? We don't know. So second option भी हमारा opening statement नहीं हो सकता. अब अगर if I look at these first and the fourth options, and if I get a chance to pick one of them as my opening statement, I'm definitely going to pick 4, because I'll refrain myself from picking an option as an opening statement that starts with while. I'm not going to. I'm certainly going to avoid it. Right? So let's just try and keep fourth option as the opening statement. ठीक है. ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? समटाइम्स बिग शिफ्ट्स हैपन इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दीज चेंजेस. ओके. अब ऐसा मत बोलना यहाँ पे भी तो दीज का प्रोनाउन है. सी यहाँ पे जो दीज का प्रोनाउन है वो किसी चीज के लिए यूज नहीं किया है. यहाँ पे ये जो दीज का प्रोनाउन है ये शिफ्ट्स की ही बात हो रही है जो उसी स्टेटमेंट में है. दैट समटाइम्स बिग शिफ्ट्स happen in front of your eyes and you're not at all aware of these changes. These changes, ये कौन से changes है? वही big shifts जो उसी ऑप्शन में दिए गए हैं. right? So we'll just keep fourth option as our opening statement. Now जैसे मैंने बोला, we know that 4 and 2, both of them are making a clear pair with each other, right? Because second option is also talking about change blindness. राइट. और फोर्थ ऑप्शन में जो टेंडेंसी की बात हुई है उसी टेंडेंसी के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है सेकंड ऑप्शन में. राइट. दिस टेंडेंसी, इट इज द सेम टेंडेंसी विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू यू गाइज इन द फोर्थ ऑप्शन. ठीक है. सो साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म चेंज ब्लाइंडनेस टू डिस्क्राइब दिस टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बी ब्लाइंड टू चेंजेस though they are in the immediate environment. So we know that 4 and 2 are making a clear pair with each other because both of them are talking about eyes. Eyes is clearly connected to blindness. अब बात करते हैं 1 and 3 की. राइट. सी अगर आप थर्ड ऑप्शन रखते हो 2 के बाद, फोर्थ ऑप्शन ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद 2 आ गया, अगर 2 के बाद आप तुरंत थर्ड को रखते हो तो ये जो इट का प्रोनाउन है ये किसके लिए है? क्या जस्टिफाई करोगे? थर्ड ऑप्शन में जो इट का प्रोनाउन है वो किसके लिए है? अगर ये आईज के लिए होता तो इट तो यूज नहीं होता, दे यूज होता ना. आईज के लिए तो आप दे यूज करते.
इट यूज नहीं करते. सो इट का प्रोनाउन यू नो दैट डेफिनेटली आइज के लिए नहीं है, एंड दैट्स हाउ यू रियलाइज दैट 1 and 3 आर मेकिंग अ क्लियर पेयर एंड 2 and 4 आर मेकिंग अ क्लियर पेयर. इट का जो प्रोनाउन है वो आइज के लिए हो ही नहीं सकता था, राइट? आइज के लिए आप लोग प्लूरल का प्रोनाउन यूज करते हो. सो थर्ड ऑप्शन बाद में आएगा. नाउ वी नो फर्स्ट ऑप्शन पहले आएगा बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में ब्रेन है जिसके लिए आपने इट का प्रोनाउन यूज किया है. सो यू नो दैट फर्स्ट पहले आएगा एंड थर्ड बाद में आएगा. वाइल यू माइट थिंक दैट यू सी और आर अवेयर ऑफ ऑल द चेंजेस दैट हैपन इन योर इमीडिएट एनवायरमेंट, देयर इज सिंपली टू मच इंफॉर्मेशन फॉर योर ब्रेन टू फुल्ली प्रोसेस एवरीथिंग, एंड देन यू कीप थ्री, right, which says that it cannot be aware. What cannot be aware? Your brain cannot be aware. Yes, Rajbir, correct. Yes, Ojil. So your brain cannot be aware of every single thing that happens in the world around you. So the clear sequence can be 4, 2, 1 and 3. Is it clear? जिन लोगों ने 1, 3, 4, 2 चूज किया है, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विथ यू गाइज माइट बी करेक्ट, बट देन यू हैव टू, अगर आपके पास दो ऑप्शंस होते ना तो मैं डेफिनेटली 4, 2, 1, 3 चूज करती, बिकॉज आई विल avoid starting my paragraph by, with the word while. So that's how, otherwise most of you are correct, yes. But I hope you guys have realized कि कौन से दो options pair बना रहे हैं. 1 and 3 are making a pair and 4 and 2 are making a pair, and that's how we get the sequence 4, 2, 1, 3. Is it clear, guys? Good? Easy? Easy for you guys? Okay, fine. Let's go to the next question. Um, try this one. Come on. Again, I'm keeping a very, very easy question in front of you. Is question ke baad, we are going to go for a trickier question. So try this. Come on. I hope you guys can see the question. दिख रहा है ना सबको? Start attempting this question and give your answers in the chat box. Come on. Okay, Prerna. Okay, Kushagra. Okay, Shashank. Okay, Dhimai. No, there is just one sequence possible for this one, Dhimai. So choose one. Okay, Mayank. Last 20 seconds to you all, and then I'll start discussing it. Okay, Samruddh. Okay, Rajveer. Okay, Ojal. Okay, Khushbu. Fine, let's have a look. See, first option cannot be our opening statement because it is starting with it. Now, we don't know what has four movable auxiliary telescopes. ये it का pronoun किसके लिए है? We don't know. So that goes out. Any which ways, second option is actually introducing VLT. So जैसे मैंने बोला, अगर आपको कोई ऐसा option दिखता है जहाँ पे किसी चीज़ को introduce किया है, then definitely that option can be our opening statement. Right, so we'll fix second option as the opening statement, but even if you want to confirm the rest of the two options, third option also doesn't make sense because it is starting with a pronoun. This configuration, which configuration, we don't know. Similarly, fourth option, when these are combined, what are combined, we don't know, right? So second option is going to be our opening statement. Now, what does second option talk about? It says completed in 2006. The VLT has four reflecting telescopes, 8.2 meter in diameter, that can observe objects 4 billion times weaker than can normally be seen with the naked eye.
फाइन, सो सेकंड ऑप्शन इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग टेलीस्कोप के वीएलटी के पास क्या है, 4 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन में, इस सेकंड ऑप्शन आपने ओपनिंग स्टेटमेंट फिक्स कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन में जो इट का प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हुआ है, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट इट ऑप्शन, इट का जो प्रोनाउन है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर वीएलटी, right? And that's why it also has also. So we have already discussed that VLT has 4 reflecting telescopes, and then we go on by saying that it also has 4 movable auxiliary telescopes. So along with these reflecting telescopes, it also has these 4 movable auxiliary telescopes. So that's how we know that 2 and 1 are making a clear pair with each other, because both of them are describing VLT, right? And the first option that has the pronoun it is being used for VLT. Okay. So we fix second option as the opening statement, then we fix first option after the second option, and then we are going to figure out कि three आएगा या four आएगा पहले, ठीक है। Now, if you look at the third option, it talks about some kind of configuration. But do you see any configuration being explained in either second or the first option? No, we do not see any configuration. Configuration कहाँ पे दिया है? Fourth option में, right? Fourth option में ये बोला है that when these are combined with the large telescopes, they produce what is called interferometry. नाउ वट एवर इज बीइंग कंबाइंड, बट हमें इतना पता है कि ये कोई कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, राइट? सो वी नो दैट यही कॉन्फ़िगरेशन है जिसके बारे में हम थर्ड ऑप्शन में बात कर रहे हैं, राइट? सो वी ऑब्वियसली नो दैट थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू कम आफ्टर द फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज थर्ड ऑप्शन में ये जो दिस का प्रोनाउन है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे दिया है? फोर्थ ऑप्शन में दिया है, right? So we know that third option is going to come after the fourth option. Now everything makes sense. We give second option, we keep second option as the introductory statement, then we keep first option of this after the second option. So second option says the VLT has 4 reflecting telescopes. First option says it also has 4 movable auxiliary telescopes. Then we go on by saying that when these are combined, अब ये these किसके लिए है? Auxiliary telescopes के लिए, something that's given to you in the first option, right? So when these auxiliary telescopes are combined with the large telescopes, they produce what is called interferometry, a simulation of the power of a mirror 16 meter in diameter and the resolution of a telescope of 200 meter. So 2, 1, 4, and then in the end we are going to have 3, which says this configuration. Which configuration? The configuration that's being given to you in the fourth option. So this configuration enables one to distinguish an astronaut on the moon. I hope you guys are clear with this. So the sequence is going to be 2 1 4 3. Clear है? बहुत सारे students का correct हुआ था. Dhimai, I hope it is clear now. Rajbir, is it clear? The sequence is going to be 2 1 4 3. बाकी mostly सबका correct ही था. Okay. Fine. Let's move forward. Now I'm going to go for a trickier question. So please make sure कि आप ध्यान से उस question को पढ़ो, ठीक है? Just give me a moment. Start. Come on. Go with this. Come on. Okay, so I'm getting answers. 4123, 1432, 2134, 213. Okay. Okay, Prerna. Okay, Shashank. Okay, Mayank. Okay, Vipul, Archana. Good guys. Okay, Kushagra.
Any more answers? I'm going to wait for like 20, 30 more seconds and then we are going to discuss. Come on. Okay, Samrudh. Okay, Dhimai. Okay, Ojal. Fine. Let's discuss this. Now, see, this paragraph is basically talking about collaborative filtering, right? It's talking about a concept that is known as collaborative filtering. And if you would have figured out the purpose of this paragraph, you would have known that D option, which means the fourth option, is actually introducing the concept of collaborative filtering, right? So sorry, guys. So you know that fourth option is going to be your opening statement, right? Because why? It's introducing collaborative filtering. It says collaborative filtering is a mathematical algorithm by which correlations and co-occurrences of behaviors are tracked and then used to make recommendations. Okay. For those who don't know what collaborative filtering is, I can just make you guys this, I can make you the understand this, that जब भी आप रोज शॉपिंग करते हो, राइट, यू गो थ्रू दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस. जब आप किसी वेबसाइट से शॉप करते हो या जस्ट आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, you guys start getting recommendations on the basis of the pattern of your behavior or on the pattern of your purchases. राइट, लेट्स से आपने कुछ परचेज किया, तो एल्गोरिदम क्या करता है, आपके पैटर्न को स्टडी करके आपको उसी पैटर्न के बेसिस पे रिकमेंडेशंस देता है. सिमिलरली, इफ यू वॉच सम काइंड ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, उसी के बेसिस पे आपके पैटर्न को स्टडी करके वो लोग आपको रिकमेंडेशंस देंगे, राइट. सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स. So fourth option is going to be our opening statement. Why? Because it's explaining collaborative filtering to us. Right. अब fourth option के बाद we are going to keep first option in the sequence. Why? Because we know that first option is actually giving us an example for collaborative filtering. First option क्या बोल रहा है? That if you have seen a little line of text on websites that says something like customers who bought this also enjoyed that, then you have experienced this collaborative filtering firsthand. राइट. सो यू नो दैट फोर्थ ऑप्शन में अगर आपको कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एक्सप्लेन किया है तो उसके तुरंत बाद आप उसके एग्जाम्पल को भी रखोगे. वन मोर रीजन टू कीप द फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर द फोर्थ ऑप्शन इज द प्रोनाउन दिस. द प्रोनाउन दिस विच इज गिवन टू यू इन द फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड लाइन. Right, they say that I mean third line, sorry, they say that if you have experienced something like customers who bought this also enjoyed that, then you have experienced this collaborative filtering. Which collaborative filtering? The filtering that's been explained to you in the fourth option, राइट. सो फोर्थ हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन को रखेंगे, राइट. नाउ because we have explained the collaborative filtering, we've also given an example of collaborative filtering. We are going to figure out the problems with collaborative filtering, right. Problems क्या होती है? आप लोगों को शायद रियलाइज होगा कि थर्ड ऑप्शन क्यों एज एन एग्जाम्पल हम नहीं रख सकते. वाई कांट वी कीप थर्ड एग्जाम्पल as an example of collaborative filtering? But अगर आपने ये पूरा पढ़ा होता, then you guys would have realized that third option is not an example of collaborative filtering. It's an example of the problems of collaborative filtering. कौन सी प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम आपको सेकंड ऑप्शन में बताई गई है. अब ये प्रॉब्लम को समझते हैं. ये प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम विद दीज एल्गोरिदम्स इज दैट दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट a host of nuances and circumstances that might interfere with their accuracy. What do we understand by this? See, बहुत सारी बार क्या होता है, हम कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं या फिर हम जो सॉन्ग को सुनते हैं वो एक्चुअली हमारे टाइप का होता नहीं है. वी आर जस्ट क्यूरियस टू फाइंड देम, राइट. लेकिन फिर हो क्या जाता है, गलती से कोई वीडियो देख लेते हैं तो उसी के बेसिस पे रिकमेंडेशंस आने लगते हैं एंड देन वी गेट इरिटेटेड, राइट. सो दैट्स व्हाट सेकंड ऑप्शन टॉक्स अबाउट, कि जो प्रॉब्लम है इन एल्गोरिदम्स की, वो क्या करते हैं, दे डोंट टेक इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ न्यूएंसेस एंड सर्कमस्टांसेस. वो तो सिर्फ पैटर्न देख के सजेशंस देने लगते हैं. जैसे आपको थर्ड ऑप्शन में भी एग्जाम्पल दिया है that if you just bought a gardening book for your cousin, you might get a flurry of links to books about gardening recommended just for you. But the algorithm has no way of knowing that you hate gardening and only bought the book as a gift. आपने एक बुक ढूंढी गार्डनिंग पे,
राइट? आपको पता है कि आपको खाली गिफ्ट देनी है आपके फ्रेंड को, बट एल्गोरिदम को तो ये चीज़ नहीं पता है दैट इट्स बॉट फॉर इट्स बॉट एज अ गिफ्ट। वो तो आपको बस रिकमेंडेशंस देना स्टार्ट कर देगा गार्डनिंग बुक्स पे, राइट? सो दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट द प्रॉब्लम्स विद दीज एल्गोरिदम्स। सबसे पहले हमने क्या किया फोर्थ ऑप्शन में, we introduced collaborative filtering, and that's why we took it as an opening statement. First option mein we gave an example to collaborative filtering. Second option mein we introduced the problem that we guys face with these algorithms with these algorithms that figure out the pattern. And last option mein we are giving an example of the problem. Okay, so introduction ka example, problem ka example, right? So the sequence is going to be 4 1 2 and 3. जिन्होंने 4 1 2 3 चूज किया है, they're absolutely correct. Very good. Okay, any questions guys, any doubts? I hope everything is clear till now. Can I please get a yes 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 in the chat box if you guys are still listening to me and you guys are enjoying the session? Yes, just post a yes in the chat box so that I can know if you guys are here with me. Yes, I'm going to keep one more question in front of you. Just give me a few moments. I want to keep a trickier version now. Come on, start. I've kept a question in front of you. Um, Start reading this and give your best shot. Come on. Okay, so already answers start ho gaye Anna. Good. I'm not going to say if your answer is correct or not. I'm just waiting for the answers from everyone else. Come on, start. Okay, fine. Okay, good guys. I'm getting a lot of answers. Happy that you guys are participating. Good, good. Demai, Archana. Good guys, very good. Keep going. 20, 30 more seconds to you guys, and then I'll start discussing the question. Yes. Okay, great. Good, good, all of you. I think mostly सबका आंसर सेम ही है. It's 2143. I'm not saying it's correct though, but we'll just check later on. Okay, fine. Let's try to understand this. Now, what is the paragraph talking about? You know that the paragraph is talking about the kind of music, which is, we can say the condition of music, which is known as atonality, right? And where is this introduced? Where is this particular condition being introduced? It is being introduced in the second option, right? It says a tonality. What is a tonality? A tonality is a condition of music in which the constructs of the music do not live within the confines of a particular key, signature, scale, or mode. So finally, we know that second option is going to be our opening statement. Why? Because it is introducing the topic, right? It is introducing what a tonality actually is, right? What is it? It is a condition of music in which the constructs of music and so on.
right? So we are definitely going to fix the second option as our opening statement. I don't think you guys will be having any doubts for this one. A lot of most of you, not exactly most of you, but I think some of you have already also chosen fourth option as an opening statement. See, fourth option just cannot be your opening statement because it starts with however. Right, I would have eliminated this option at the very first glance. I would have never chosen this as an opening statement. Why? Because if a statement is starting with however, then it must have contradicted, it must have gone against something else, right? When do we use however? We use however if we want to go against something, if we want to contradict something. एंड अगर आप आपका पैराग्राफ ही हाउएवर से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि वो कॉन्ट्रडिक्ट किसको कर रहा है, वो किस चीज के अगेंस्ट जा रहा है. फोर्थ ऑप्शन जस्ट कैन नॉट बी योर ओपनिंग स्टेटमेंट. ओके, second option is going to be our opening statement because it is introducing the main topic, tonality. Now, second option के बाद क्या आएगा? See, there's a whole story. ये story क्या बता रही है? That's why it's important to understand the purpose. Purpose ये है, story ये है कि atonality is a kind of a condition in which constructs of music do not live within the confines of a particular key, signature, scale or mode. Then they say कि जो uninitiated listener है, राइट, उसके लिए एटोनल म्यूजिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा. ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें कितनी सारी नॉलेज और स्किल और टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके आपको रियलाइज होता है दैट इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट. सो यही स्टोरी है पूरे पैराग्राफ की. नाउ सेकेंड ऑप्शन के बाद आप फर्स्ट ऑप्शन को रखोगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेकिंग पेयर्स with each other, right? Second option is introducing a tonality, and first option is saying that to an uninitiated listener, a tonal music can sound like chaotic random noise. What do you understand with the word chaotic? Chaotic is confusing, right? So first option mein, because they say that to an uninitiated listener a tonal music can sound like chaotic and random noise, it's going to make a clear pair with the second option. अब हमें फिगर आउट करना है थर्ड एंड फोर्थ को, राइट? सी, टेल मी वन थिंग, अगर फोर्थ ऑप्शन में हाउ एवर लिखा है एंड उसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ो, हाउ एवर अ टोनलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन 20th century music, you know that 1 and 4 are making a clear pair with each other. Absolutely, Hardik, correct. 1 and 4 are making a clear pair with each other. How? जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि however आप कब यूज करते हो, जब आपको किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, किसी चीज के अगेंस्ट जाना होता है, राइट? अब फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? द टोनलिटी इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट? तो अगर आपको यही स्टेटमेंट को किसी और स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाना है, किसी और स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए एटोनलिटी के बारे में, राइट? दैट्स वाई आप हाउएवर यूज करके उसको कॉन्ट्रडिक्ट करोगे ना, बिकॉज हाउएवर यूज करके फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है? दैट एटोनलिटी इज इंपॉर्टेंट. So you're going to use however if you want to go against a statement that talks about any negative thing about tonality, right? And there is only one option out of all the four options that is actually talking about any negative idea or any negative thing about atonal music, right? जो कि first option है. First option क्या बोल रहा है? To the uninitiated listener, atonal music can sound like chaotic random noise. But then you go against the statement by using however and saying that however, atonality is one of the most important movements in the 20th century music, right? So we know that 1 and 4 are making a clear pair with each other, right? Now, second option is the opening statement. उसके बाद 1 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, 2 1 4. एंड में 3 क्यों आएगा? बिकॉज 3 ऑप्शन क्या कर रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है? फोर्थ को जस्टिफाई कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन के लिए रीजन दे रहा है. अब फोर्थ ऑप्शन में आपने बोल तो दिया दैट एटोनलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, बट यू ऑल्सो हैव टू जस्टिफाई इट, राइट? How is it one of the most important movements, or why is it one of the most important movements? Because it requires a lot of a lot of amount of knowledge, skill and technical expertise, which is being given to you in the third option, that after you realize the amount of knowledge, skill and technical expertise required to compose or perform it, your tune may change, so to speak. I hope now it makes sense for us to arrange this into the sequence of 2 1 4 and 3. Is it clear, guys? 2143 is going to be the correct answer. Archana, I hope is it clear? It is clear.
Okay, Sumit, fine. Samrudh, I hope it is clear. Prerna, Pragati, 2143 is going to be the correct answer. Yeah, I hope it makes sense to all of you. Subshri, I hope it is clear. Fine. Let's go to the next question. Last question for the session. Just give me a moment. Come on, try this. Try this question, last question for the session, and give your answers in the chat box. Come on. Okay, fine. Answers already start ho gaye Anna. Good guys. When I want all of you to answer this. Okay, Dhimai. Okay, Khushbu. Okay, Shika. See, there's a clear pair right in front of you. प्रोनाउन की हेल्प से आप एक क्लियर पेयर बना पा रहे हो, बना सकते हो. एंड इनफैक्ट ओपनिंग स्टेटमेंट भी बहुत ईजी है इसमें फाइंड आउट करना, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द होल आइडिया राइट इन फ्रंट ऑफ यू. So, yes, correct. Most of you guys are correct, but uh, okay, fine. Okay, let's have a look. Now, see, what is the whole paragraph talking about? It is talking about a business practice that is known as phoenixing. Right now, ये चीज कहाँ पे introduce हुई है? It is being introduced to you guys in the third option. Right, third option says deliberate and systematic liquidation of a company to avoid liabilities and then restarting the business is called phoenixing. Right, so you definitely know the third option is going to be your opening statement, because it is something that is actually introducing the main idea or the main purpose of the whole passage. Phoenixing की जो definition है वो third में ही है, so third option is going to be your opening statement. इसके बाद क्या आएगा? See, third option is making a clear pair with the second option. Also, first option is making a clear pair with the fourth option. There are two clear pairs in this particular question. Second option third के साथ कैसे pair बना रही है? Because of the pronoun such, routinely engage in such activities. Right, just read this. Companies in many countries routinely engage in such activities, which means that the employees are left with unpaid entitlements. ये such activities कौन सी activities की बात हो रही है? वही activities जिसकी बात third option में की है. Right, ये activities, deliberate and systematic liquidation of a company to avoid liabilities. Right, now we have one more pair. एक कौन सी pair है? Fourth and first option की. Right, exactly, Ishika, correct. Fourth option में क्या लिखा है? The Australian Minister for Revenue and Services discovered in an audit that phoenixing had cost the Australian economy between 2.9 billion and 2.9 billion and 5.1 billion last year. Right? So
Now you know that fourth and the first option are also making a clear pair with each other. Why? Because of the pronoun his. ये his का pronoun किसके लिए use होगा? There is just one person जिसकी बात हुई है paragraph में, and he is the Australian minister, right? So fourth and the first option are clearly making a pair. First option says it was his taxpayers who had to shell out as much as $1.6 billion over 10 years to employees of failed companies, राइट? सो पहले हमने फीनिक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया थर्ड ऑप्शन, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में बात की दैट कंपनीज इन मेनी कंट्रीज रूटीनली एंगेज इन सच एक्टिविटीज. देन वी ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर, एंड देन हमने फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके फर्स्ट ऑप्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन दी दैट इट वॉज टैक्स पेयर्स हु हैड टू शेल आउट एज मच एज $1.6 billion, राइट? द क्लियर सीक्वेंस हैज टू बी 3, 2, 4, 1. I hope this is clear to all of you. Yes? Is this clear to you guys? Can I please have a yes, yes, yes in the chat box from all of you if you guys, enjoyed all the questions and understood all the questions being discussed in today's session? Did you guys understand the whole approach? I hope you people feel more confident after today's session. And I hope you guys keep on practicing because Parajumbles needs a lot of practice, right? So please keep practicing, guys. And I just want a yes from all of you if you guys understood everything in today's session. Yes? Good. Good. Thank you. Thank you so much, guys. And I will just suggest you all to keep practicing. At least make sure कि daily basis पे 2 से 3 questions parajumbles के solve करो. बहुत practice needed है. Parajumbles as well as parasummary. Both these are very, very important kind of concepts and kind of questions for you all. Right? Okay, guys. So I'm going to take your leave, and I hope you guys enjoyed the session. I'll be back next week with an important topic. So don't forget to attend the session and take care of yourselves. Bye bye. Thank you so much.